Okay, can you all see the screen, this portion, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, good morning, students, once again. In the last class that was yesterday, we were discussing about the the eyes. I mean, in the sensory system, na? In the sensory organs, we were discussing about the eyes. So, everyone is clear about the eyes? If I ask you any question, will you be able to answer me? Yes? If I ask you, will you be able to answer? Yes, ma'am. Okay, let me ask them. Just wait, huh? Just wait 1 minute. Can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Okay, let me ask them. Manisha, am I audible? Yes, ma'am. Okay, Manisha, can you tell me? Just wait. Okay. Manisha, can you tell me the cornea is also known as what? Cornea. Have you heard the word cornea? Yes, C-O-R-N. ma'am. So what is it? Cornea. Mm, Can you tell me something about cornea? and it is the central interior portion of the fibrous layer in crystal clear. It's what? It's what? It is the central interior. Huh. It is the central interior portion of the Interior. fib- yes, ma'am. Anterior. Anterior. Okay, what do you mean by anterior? Huh? And inside. Anterior means inside. Are you sure? Are you sure? Not sure. Not sure. Okay, who can tell me what is the meaning of anterior? CT. CT? Yes, ma'am. Tell me the meaning of anterior. Huh? Tell me the meaning of anterior. Ma'am, front side. Front side or else forward. It's not it. Yes. Okay, did you get it, Manisha, now? Yes, ma'am. Anterior means say. Anterior means Front side. don't get confused. Okay, don't say interior. It's not in the interior, it's anterior. Let me just show you again. Can you see this, Manisha? Yes, ma'am. So this is the cornea. It lies in the central, I mean in the middle, right at the center. Center means in the middle. All right, and it is in the anterior side. Anterior means in the front side. Front. Is it clear? And it's crystal clear. Crystal clear means it's very much clear. Everything can be seen. It's very much clear. Means it's like transparent. And they are like a window. They are like a window. Means if the light passes over this, it directly enters here in the cornea. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. I have also said about the reflexes. No, I have also discussed about the two reflexes. So, Suraksha, can you tell me the name of those two reflexes? Suraksha, am I audible?
What happened? Aliza, am I audible? Aliza? Ma'am. Can you tell me the name of those two reflexes? Ma'am. Can you tell me the name of those two reflexes that is in the eyes? Yesterday we have discussed about this. Ma'am, sclera and pupil. Hmm. Are you sure? Yes, ma'am. Oh, Eye reflex, eye reflex. photopupillary reflex. And? Accommodation pupillary reflex. Okay. Okay, Arif, am I audible? Arif? Arif? Okay, Asim, am I audible? Yes, ma'am. Okay, Asim, can you tell me about photopupillary reflex? Suddenly, light What? uh, Sudden light. damaging the eyes, ma'am. It damage the eyes. Are you sure? Bring the light from damage. No. मतलब मैम वो आंखों पे रोशनी पड़ने से छोटा हो जाता है. मतलब अगर अचानक से अगर धूप आ गया या फिर रोशनी आ गया तो क्या होगा? Yes, ma'am. तुम्हारा आँख को क्या होगा? कौन सा वाला छोटा हो जाता है पोर्शन मैम. या कौन सा वाला पार्ट छोटा होगा? कॉन्ट्रैक्ट में. हाँ, पता है कंट्रक्शन होगा और एल्स कंस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन कौन सा वाला पार्ट? पपिल. हाँ, वो कपिल। जो पपिल, हाँ मैम. कपिल, आर यू श्योर? प्लीज स्पेल इट. यस. कपिल. PUPIL. Oh my, you say pupil. People. Oh, yes, sorry, ma'am. Okay, don't say. I thought you said Kapil. That's why I asked you to spell it. Okay. The pupil. It comes मतलब छोटा होता है कि नहीं? Yes, क्यों छोटा होता है? उसका कारण क्या है? उसका वजह क्या है? क्या तुम बोल पाओगे? Can you say it? The reason? लाइट आकर मतलब वहाँ पे जैसे वो छोटा छोटा प्रोटेक्ट करने के लिए. हाँ. Okay. Please say it again. मैम वो मतलब रोशनी आने की वजह से वो आँख छोटा हो जाता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए. अच्छा, मतलब उसका नुकसान ना होने के लिए, मतलब हम लोग का हाँ. आँख तो बहुत सेंसिटिव है ना, डेलिकेट है, उसको डेलिकेट भी बोलते हैं। तो हम लोग का आँख में नुकसान या फिर हाँ नुकसान ना होने के लिए ये हम लोग का मदद करता है कि नहीं? हाँ मैम. अच्छा, ठीक है। ओके, व्हाट इज द अनदर रिफ्लेक्स? अनदर रिफ्लेक्स, बालो, टेल मी. बालो, बालो चदाक, am I audible? We have discussed about the eye reflex. हम लोगों ने आई रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोग को दो तरीके का रिफ्लेक्स मिलता है यहाँ पर। तो एक है फोटोपिपुलर रिफ्लेक्स और दूसरा क्या है? बालो, बोलो, मुझे जवाब दो बालो। टेल मी द आंसर। दिव्यजीत, कैन यू टेल मी? क्या तुम बोल पाओगे? Yes, ma'am. हाँ, टेल मी. Eyes reflex. नो, द अनदर नेम. पहला क्या है? पहला तो फोटोपिपुलर रिफ्लेक्स है ना, और दूसरा क्या है? हाँ. व्हाट इज द सेकंड वन? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड रिफ्लेक्स? Just tell me the Photopu- name. Protective reflex, ma'am. What?
Protective reflex. Huh? What did you say? हाँ मैम क्या बोला तुमने? protective reflex. Are you sure? Yes ma'am. I don't think so. Deep Jyoti, tell me the answer. Deep Jyoti, Yes ma'am. हाँ बोलो, दूसरा नाम क्या है? हाँ दूसरा नाम क्या है? दीप ज्योति बोलो बोलो. Gayatri, do you know the answer? Yes, ma'am. हाँ please tell. Accommodation pupillary reflex. Okay, what happens there? What happens? Manas, what happens in the accommodation pupillary reflex? Manas. Manas de Burma, what happens? What happened? You all are so not cooperative. Pin Krao Byung, tell me the answer. Focusing near object, ma'am. Can you please repeat again? Focus near object. To Focus near focus. object. Okay. And here, what happens to the pupil? Will it expand or else will it become larger in size or else will it contract or what will happen? Or else it will go. Contract, ma'am. Uh-huh. Please repeat. What did you say? Can you please repeat? Constrict, ma'am. Constrict. Okay, good. Okay, don't forget, huh? So many times I have repeated yesterday also. Not only yesterday, I think in the previous class also I have repeated many times. So please don't forget. I even gave you the notes, the PDF I have sent. It's not it. So please don't forget it. Okay, so today we will be continuing with the next sense organ, which is the ear. So the ear helps in what? The ear, it helps us in hearing and to perceive the sound. I mean, whatever sound we are hearing from the outside environment or from the outside world, we are able to hear all those. And this is about the anatomy of the ear. So in the ear, what will you find? You will find that they are divided into three major areas. What are those? The first one is the external ear, or else you can say the outer ear, which is this. The next is the middle ear, this one. And the third is the inner ear, or else you can say the internal ear. Is it clear, everyone? The three major areas. Don't forget. Later on, don't tell me like I don't know the three major areas of the ear, or else don't tell me the incorrect one, like 2, 1, like that. Don't say like that. Is it clear? हमारे कान में 3 एरियाज है. ठीक है, पहला क्या है? पहला है एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर में होते हैं, उसको आउटर ईयर भी बोला जाता है. और दूसरा है बीच में, क्या है? बीच में मिडिल ईयर होता है. ठीक है. और तीसरा क्या है? तीसरा एरिया है, उसका नाम है इंटरनल ईयर, या फिर उसको बोलते हैं इनर ईयर, जो अंदर में रहते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes ma'am. How many areas are there? Shilin, how many areas are there in the ear? Tell me. Shilin? Shilin. Suraksha, tell me, how many areas are there? Okay, ma'am. 3. Name them.
Please name them. Outer ear, middle ear, inner ear. Okay. Will you forget? No, Will ma'am. you don't forget. Okay. Okay, let's see about the external ear or else the outer ear. So the outer ear or the external ear, it is composed of what? It is composed of the external acoustic mucus, which is this portion. It is known as the external acoustic mucus. I hope it's clear. This is the auricle. All right, this is the auricle, and they are composed of what? They are composed of the external acoustic mucus, which is this. External acoustic mucus, oh sorry. The outer or else the external ear is composed of what? Smita? Yes, ma'am. The external, sorry, the external or else the outer ear is composed of what? Ma'am. Auricle and external acoustic meters. Ma'am. Okay, very good. This, okay, I'll ask like this every now and then. Because some people, they just, what do? They just they just attend and they go and sit or else they go and roam somewhere else. So that's why I'll ask you every now and then. Now, Uh-huh. Yes. now it's clear, ma'am. Yes, Balo, what did you say? हाँ बोलो तो. Now it's clear, ma'am. Your Oh, voice. now it's clear. Okay, तुमने अपना जगह बदल दिया है. Ma'am, yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. ठीक है, बदलते रहना. अगर नेटवर्क क्लियर नहीं है तो बदलते रहना, ठीक है. बाकी मतलब उपाय नहीं है, सिर्फ यही उपाय है. अच्छा ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Okay, so external acoustic meters, this is the external acoustic meters. So the external acoustic meters, it is what? They are short, right? Means वो लोग छोटे हैं, and they are narrow. Narrow means they are small. Understand? Means they are very narrow. Means they are small and they are short, and they are curved into the temporal bone. Means, can you see me? Am I visible? Can you see me or not? Just tell me. Yes, ma'am. Okay, so they Ma'am. are curved into the temporal bone. So this is your temporal bone. It's not it. So suppose this is your external acoustic meters, no? Means their external ear. So they are curved like this. Means it's here in the temporal bone, right here. Is it clear? Yes? Yes, yes, ma'am. Don't tell me later on. Don't tell me your temporal bone is here or here. Don't tell me. I'm showing you, I think more than 3-4 times, I think so. So later on, don't tell me the temporal bone is here or else here. I won't. It will be unacceptable. So please note it down that your temporal bone is right here. Means you can even check your pulse. That is the temporal bone. Okay. Okay, so what happens here in the external acoustic meters means in your this one. And the external acoustic meters, your temporal bone is curved inside the skull, means inside this. And the external acoustic meters, what will you find here? They are lined. I mean, walls are there. Walls are there in the external acoustic meters. Here, what happens? You will be able to find glands, which is known as the ceruminous glands. All right. So this ceruminous glands, what is the function? What is their purpose? What is the purpose of this ceruminous gland? The purpose is that they make or else they secrete or else they produce yellow cerumen, yellow color, which is also known as earwax. Have you heard earwax? Yes, ma'am. So this is they produce the earwax. And what happens here in the external acoustic meters, all the foreign particles, whatever will enter inside your ears, they are trapped. वो लोग झाल का जैसा है.
झाल मकड़ी, I think you have heard ना that one, सुना है, I heard, I guess, I mean, तो वो लोग ऐसा Yes, ma'am. है, मतलब जो भी बाहर से आते हैं ना, वो उन लोग का कब्जा करते हैं, ताकि हम लोग का कान के अंदर एकदम अंदर ना जाए और हम लोग को नुकसान ना पहुंचे फ्यूचर में। तो इसके वजह से ये सेरेब्रस ग्लैंड्स मौजूद है हम लोग के कान के अंदर। सो दिस इज द रीजन व्हाई द सेरेब्रस ग्लैंड इज बीइंग secreted in the external acoustic meters, so that they won't create any harm in our future, so that it might go inside the brain also. It's not it, if it goes inside the brain, you just imagine अगर हम लोग का दिमाग के अंदर जाने से सोचो, मतलब कुछ फॉरेन, मतलब बाहर का चीज़ें अगर तुम्हारा यहाँ पे जाने से, तो इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकेगा, ऑब्वियसली होगा ही। So this is the reason why the cereminous glands is being secreted, or else they are made. Is it clear? Shall we move to the next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let me ask. अमर ज्योति, अमर ज्योति देखा, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अमर ज्योति? मुझे तुरंत जवाब दो, जल्दी। हाँ, तुम्हारा माइक ऑन है। हाँ, ऑन करो, कंटिन्यू करो, ऑन करो। अच्छा, सुनाई दे रहा है? सिर्फ बोलना हाँ या ना, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, बहुत दिनों से मतलब तुम्हारा आवाज नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के बारे में बोला था ना, तो ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स में एक ग्लैंड होता है इसके अंदर, तो वो ग्लैंड का नाम क्या है? Ma'am, हाँ, बोलो। मैंने एक ग्लैंड का नाम बोला था ना, तो वो ग्लैंड का नाम क्या है? वो सी से स्टार्ट होता है। सी से स्टार्ट होता है। अरे भूल गया क्या? भूल गया? Did you forget? yes, ma'am. Okay, let me just show you again. But you have to tell me the answer. दिखाई दे रहा है ये? Yes, ma'am. हाँ, पढ़ो। क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने एरो में मतलब Sir, मैं एरो को ऐसे मूव कर रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये पार्ट, ये पोर्शन। ma'am. हाँ, पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे? Ceremonous glands, ma'am. हाँ, तो कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस होता है, अभी बोलो। Ma'am, ceremonous. अच्छा, ये सेरोमिनस ग्लैंड्स क्या करता है, उसका काम क्या है? कुछ तो काम होगा ना, ऐसे तो बैठा नहीं होगा, कुछ तो काम करता होगा, तो उसका काम क्या है? Ma'am, वो लोग ऐसे दिखते हैं. हाँ हाँ, बोलो बोलो, उसका काम क्या है? Ma'am, वो वो ऐसे दिखते हैं. क्लियर नहीं है आवाज, क्या अच्छे से बोलो तो, धीरे से, तुम्हारा आवाज धीरे और थोड़ा जोर से बोलो। क्या करता है ये? अरे जल्दी बोलो। ओके, Ma'am, जस्ट रीड। वो ऐसे दिखते हैं, ma'am. एयरवैक्स, अच्छा, तो ये एयरवैक्स अंदर होके उसका काम क्या है? क्या करता है ये एयरवैक्स या फिर येलो सेरुमेन, क्या करता है ये? It's वो ऐसे sticky trap for poison bodies and repels.
अच्छा, क्या समझ में आया बोलो तो? What did you understand? वो देखो हाँ, क्या समझ में आया ये पढ़ के, ये लाइन पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आया बोलो तो? समझ आता है मैम। हाँ हाँ, ओके, मैं बोल देती हूँ। ये क्या करता है, जो बाहर के चीजें, ठीक है, धूल बोलो या फिर कुछ इंसेक्ट्स, ये सब अगर हम लोग का कान के अंदर जाने से, कभी कभी होता है ना, छोटा छोटा वो क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स हम लोग के कान के अंदर आ जाता है कभी कभी, है कि नहीं? क्या तुमने एक्सपीरियंस किया है? Yes, ma'am. हाँ, तो कभी कभी जब आता है, तो ये येलो सेरुमेन, उस ये वो जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स पे है, मतलब थोड़ा अंदर में होता है कान के अंदर, तो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये सेरेमिनस ग्लैंड, सॉरी, हाँ, सेरेमिनस ग्लैंड्स जो है, जो येलो सेरेमन प्रोवाइड करता है, तो ये झाल झाल मकड़ी सुना है, स्पाइडर वेब? Yes, ma'am. हाँ, तो उसका जैसा है, मान लेना वो लोग ऐसा ही है, ठीक है। और Mm. वो लोग मतलब ट्रैप करता है, कब्जा करता है, जो फॉरेन, जो बाहर बाहर से जो आते हैं ना, वो कब्जा करते हैं उन लोग का। तो अगर कब्जा करने से अ, तुम्हारा दिमाग या फिर तुम्हारा इंटरनल जो विसरल ऑर्गन्स होता है उसके अंदर तो नहीं जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी वो Yes, लोग ma'am. कब्जा है। अच्छा, तो अगर वो लोग कब्जे है, तो एक ना एक दिन तो ऑब्वियसली तुम्हारा कान तो तुम साफ करोगे, है कि नहीं? या फिर तुम कान साफ ही नहीं करते हो? करते हैं। करते हो, अच्छा। तो उस वक्त या फिर उस समय वो निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरह Yes, ma'am. अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारा शरीर के अंदर नहीं जाएगा, क्या, ताकि तुम्हें फ्यूचर में नुकसान ना पहुंचे या फिर नुकसान ना पहुंच पाए। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, नहीं Yeah. भूलोगे ना? नहीं Yes. मैम। अच्छा, मैं एक दिन फिर से पूछूंगी, सेरेमिनस ग्लैंड्स क्या है, उसका काम क्या, आई आस्क यू अगेन, सो दैट टाइम डोंट टेल मी, उस वक्त उस टाइम मत बोलना मैम आई फॉरगॉट, और मैं भूल गई एंड सो ऑन, आई डोंट वांट all those excuses. Okay. Okay, next is the tympanic membrane. So this is the tympanic membrane. All right. We are still in the outer ear. हम लोग अभी भी outer ear में हैं. Okay, so the tympanic membrane, what does it do? In the tympanic membrane, when the sound waves, obviously if you hear a sound, they will produce over here inside your ear. It will go inside this. It's not it. So when it goes into the ear canal, I mean this is the auditory canal, and it will hit, or else it will pass over this, which is the tympanic membrane, or else you can also say is that eardrum. Understand? You can also say this one as the eardrum. And what happens here, when the sound produced from the outside environment, when they comes over here and hits here, they will vibrate. It's not it. When you, I mean, all of you, you play drums or not? तबला या फिर ये बजाते हो ढोल वगैरह? You play? Do you play? No, ma'am. I Huh? Okay, Balo hear doesn't used to play. What about others? Do you play? Sometimes, ma'am. Sometimes. Okay. When you hit the drum, what happens? जब तुम ढोल या फिर तबला वगैरह वो सब ऐसे बजाते हो, क्या होता है? What changes can you see in that instrument? it will vibrate. It will get vibrate and it will make sound. Yes, exactly. Very good. Okay, so same thing होता है tympanic membrane में भी, ठीक है। जब साउंड वेव्स जब हिट होता है, ठीक है, तो वाइब्रेट करना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। अंडरस्टैंड?
And you can also hear the sound, whatever sound you are getting from the outside world, no? They does that. And the tympanic membrane is the separation of the external and the middle ear. Is it clear? Tympanic membrane क्या है? Tympanic membrane outer ear और middle ear का separate करता है. ठीक है, मतलब समझ लेना कि बीच में है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर का बीच में ये tympanic membrane होता है या फिर मौजूद है. Is it clear everyone about the tympanic membrane? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, don't forget. Tympanic membrane is also known as what? Let me ask Shilunok. Can you tell me? Tympanic membrane is also known as? What happened? Am I not audible or what? Other students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, Huh. ma'am. Yes, ma'am. Reply fast, Shilunok. Tympanic membrane is also known as? Eardrum. Very good. Balo, na? Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, so for today we will discuss till here, till the tympanic membrane. In the next class, we will start discussing with the middle ear. All right, is it clear, everyone, today's class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, then thank you, everyone. That's all for today's class. Yeah, I'm in your anatomy.